Namaskar, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, listeners and learners. Those who are watching, listening from science, arts, commerce, and engineering. The most honorable President President Modi ji, respected ministers and doctors, honorable advocates, advertisers, administrators and advisors, reverend fathers and mothers, affectionate sons and daughters. I Dr. Rakesh from USA heartily cordially welcome all of you. नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं YouTube 3M Creator. It's YouTube 3M Creator. Dear friends, today it is nice time, nice place, nice action. We are describing this day with science to spirituality, language to literature. Just a minute, please. Thank you for waiting. Let us discuss tomorrow, today, and yesterday. How these three words directs us, informs us, instructs us to do something better, nicer, finer for our society. All freedom fighters, free thinkers, astronomers, astrologers came in India, and it is our holy motherland. We appreciate, admire, praise its holy actions in the form of nature. When we talk about the learning of new language, what comes in our mind? That is grammar. For knowing the complete information, for getting the complete information of the literature, of magazines and newspapers, it is very necessary to know the fundamentals of language, basics of language. No doubt our scholars relearn in every class, in school, college, and universities. Even after becoming professional, it is their need to know the basics. How we can keep it easy and memorable for our long lasting time. That can help us
in creating, operating, generating something new in writing, reading, listening, and speaking of the language. At this present time, our university scholars are studying literature. They are just studying for their marks, not for the development of our society or nation. Great ideas, great thoughts, high ideals help our nation in becoming a healthy nation. So let us discuss the foundation course of English grammar classes for all the scholars. We discuss word and sentence in grammar. Word is the common concept in all kind of parts of speech that we have discussed yesterday. How word helps us in writing, reading, speaking, listening accurately and naturally. What does the mean of accuracy and naturality in language? Means perfection. No doubt nobody can be perfect in any particular skill, but near to perfection we can imagine. So for that, our youngsters must be well mannered, styled, skilled while using the sound and light of the letters. Two kinds of grammar we discuss in competitive classes and for the school students, university or college scholars. One is permanent grammar. What is permanent grammar? Permanent words are known as the part of permanent grammar in English language, literature, and grammar. Changeable grammar has the base of verb because verb is the name of change or action. What kind of changes we study in verb? That is, we have studied in our school classes. Verb means action, no doubt, but these can be understood by the indicators of time, all helping us that we study in English grammar that indicates about the time. So helping us are known as the time indicators like is, am, are. If we imagine these words for keeping our present sense of mind in present, then these words help us in imagining the present with is, am, are. And if we think or imagine was were, then it helps us, it takes our stream of thought in the past. Likely it will shall help us in going stream of thoughts in the futures. How these common simple words of English grammar help us in keeping our mind active or makes us able to create anything new to speak, read, write, and listen
about any person, place, or thing. Dear friends, today our scholars have become the bookworms. They have just limited to their books, not their practical ones. Social media is helping them in downloading, recording, saving, imitating new inventive and innovative changes. But it needs imaginative changes, which is the best educational technology all over the world. Our old scholars, those who are studying in India and abroad, they know this thing that nature is their true friend. So, nature of the world help us in knowing something new, to create something common. All natural changes that we see around us that are described in present indefinite tense, because it is the first sentence, means first idea of the mind that we imagine whenever we watch, whenever we observe anything. Whatsoever we do with our senses, that is described in present indefinite tense, not in present continuous tense. Whatsoever happens in our mind and heart, that is also describes that is also described in present indefinite tense. Simply, if we are the operator of YouTube, Instagram, Facebook, we say please like, share, comment, subscribe. These words we use, and the subscribers never can say I am liking you, I am sharing you, I am subscribing you, because these actions happen in our mind, and the actions that happen in our mind are always described in present indefinite tense, not in present continuous tense. Whatsoever happens in our heart, that is also described in present indefinite tense. So our total mechanism of our human body that we have in present, that is described in present indefinite tense. No doubt present indefinite is a symbol of uncertainty of time, but something is permanent in action, that is described naturally. Dear friends, two things are very common before knowing every part of speech: phrase and sentence. What is a phrase? Phrase can be compared with a plant, but sentence can be compared with a tree. A phrase can be compared with a child, but a sentence can be compared with a man. According to the definitions of phrase and sentence, what is the common between phrase and sentence? That is a group of words. What is uncommon? That is a group of words that makes incomplete meaning and incomplete sense is called phrase, but a group of words that makes complete meaning and complete sense is called a sentence. This is the difference between phrase and sentence. So sentence is the complete part of our stream of thought. All grammarians have described the sentence in five kinds. One thought that comes directly in our mind, we read it as affirmative, assertive, declarative, positive, or statement. These words we study in the different competitive books like in Kiran, Paramount, Arihant,
in all kind of competitive books, we study the different levels of this first kind of stream of thought that comes in our mind. But it means very simple, that simple sentence where we think positively. So our mind firstly give us the idea of positivity. So we say affirmation, assertion, declaration, position, condition, situation. Presently, whatsoever we see, whatsoever we feel, whatsoever we imagine, whatsoever we think around us, that is explained in the form of present indefinite tense. Very simply, we can describe all kind of person, place and thing just by using is, am, are without taking the help of main verb. Is, am, are is the symbol of present, and we make sentences by taking the help of is, am, are. How? With sentence structure, subject, is, am, are plus adjective, adverb, noun, pronoun, any other part of speech we can use after this helping verb. That we study in English fundamentally. What is a sentence? In simple word, a sentence is a group or set of words that are put together in an arranged manner to express complete sense. Sorry. A grammatical unit of one or more words that expresses an independent statement, question, request, command, exclamation, etc., and that typically has a subject as well as predicate. For example, Harshit is here. Is Harshit here? Man is mortal. Ashoka was a great king. In print or writing, a sentence begins with a capital letter and ends with appropriate punctuation. In sentence, it displays recognition, communicative into nation patterns and is often marked by preceding and pauses. Parts of speech. One is subject and second is predicate. In parts of speech, we study subject. Harshit went to Sydney. Harit helps me daily. In predicate, Harish went to Sydney. Harit helps me daily. What and how, when, where, these words are applicable and implementable while using the words in any particular sentence. How do we generate, operate, and develop the good or an ideal article paragraph in speaking, reading, writing, and listening? It is also a kind of technique, training, or technology that is needed, greatly needed, while expressing knowledgeable, informative, instructive, and directive passages. Dear friends, let us discuss something more important in our language, how we describe it, types of sentences that we have studied earlier. सेंटेंस को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है.
स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे आई टीच इंग्लिश, आई शैल हेल्प यू, आई वुड गिव यू मनी। कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल, कम और गो, कम हेयर एंड सिट डाउन, मैन proposes and God disposes. Similarly, थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक मेन क्लाउज अर्थात प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउजेस होते हैं। जैसे he said that sun rises in the east and sets in the west. It is an example of complex sentence. If you come to me, I will help you. If he had taught me, I would have passed the exam. मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंसेस पांच प्रकार के होते हैं। There are five kind of sentences that we have commonly or generally discussed before. One is assertive sentence, जिसे हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव दोनों ही तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट इज द नेगेटिव सेंटेंस इन अफर्मेटिव। ही इज नॉट ऑनेस्ट, नेगेटिव। एवरीवन मेक्स ए मिस्टेक, अफर्मेटिव। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नेगेटिव। एवरीथिंग इज पॉसिबल इज अफर्मेटिव। व्हाट आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? ये क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब या फिर WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं। आर यू ए स्टूडेंट, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हु कैन डू दिस वर्क, WH फैमिली वर्ड्स। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, WH फैमिली वर्ड। डू यू लव मी, हेल्पिंग वर्ब। एम आई राइट, हेल्पिंग वर्ब। Who can stand against a woman's will, use of WH family word. थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये सेंटेंस हमेशा वर्ब फर्स्ट से शुरू होते हैं। यदि सेंटेंस में एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या मनाही होती है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। निषेध वाले वाक्य हमेशा डोंट या नेवर से शुरू होते हैं। जब हम निगेशन शो करते हैं वे हमेशा डोंट या नेवर से शुरू होते हैं। इनका सब्जेक्ट यू होता है जो कि हिडन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। हियर वी डोंट यूज यू, हियर यू इज हिडन and it is a kind of advice. Don't tell a lie, it is a prohibition. Never cheat your friend is prohibition. Let us go, it is a kind of offer. Don't smoke, here prohibition. Don't make a noise, prohibition. Please help me, request. Open the door at once, it's a kind of order. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों में हैरानी, अकस्मात खुशी या गम का भाव हो। हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट ए बिग बंगलो, हाउ ए नाइस, ओ दैट आई वर रिच, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम, हाउ ओल्ड यू आर। लास्ट इज ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, जिन वाक्यों में इच्छा, प्रार्थना से या आशीर्वाद का भाव हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव विथ प्रॉस्पेरिटी,
May God grant you a daughter. Would that I were the PM. May you die of cancer. In the formation of sentences we study, अफर्मेटिव बनाने के लिए फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. I am a teacher. I am teaching. He teaches me. Here we are using affirmative sentence structure. For in first sentence, very simply we are saying I am a teacher. In second sentence, I am teaching. Here we are using an action. He teaches me. It is also a kind of action that we expresses in present indefinite tense. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ए टीचर. आई एम नॉट टीचिंग. ही डज नॉट टीच मी. नेगेटिव सेंटेंस. कुछ नेगेटिव वर्ड्स से भी बनते हैं जिनका अध्ययन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से करेंगे. जैसे नो, नन, नोबडी, नो वन, नथिंग, सेल्डम, never, few, little, hardly, scarcely, unless, until, neither, nor, etc. Nobody helps me. I have little money. Barking dogs seldom bite. Hardly had I entered the room when the light went off, etc. इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं. The answer is given in yes or no. Helping verb plus subject plus verb plus object. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. No, I am not a teacher. Are you teaching? Yes, I am teaching. No, I am not teaching. Do I teach you? Can you help me? May I come in? WH फैमिली से इंटरोगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड्स को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब से पहले रखते हैं. There are 9 words which start from WH. What, where, when, why, how, whom, whose, which, how. WH word plus helping verb plus subject plus verb plus object. What is your name? Why am I teaching? Some other examples. What is your name? To ask name, designation or thing. Where do you live? To ask place. When do you get up in the morning? To ask time. Why do you learn English? To ask reason. Who teaches you English? To ask subject. Whom do you teach English? To ask object. Whose pen is this? To ask possession. Which is your favorite color? To ask choice. How do you come here? To ask manner. There are some question tags. जब हमारे साथ कोई ऐसा फैक्ट, आइडिया और थॉट आता है जिस पर हम पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होते, तो उसकी पुष्टि के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. जैसे मैं आपको जानता हूँ. मैं आपको जानता हूँ. आई नो यू. है ना? डोंट इट. वह मुझे जानता है. ही नोज मी. है ना? डजंट ही. नाउ डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस वर्ब. किसी भी कार्य का होना या किसी भी नाउन या प्रोनाउन का एग्जिस्टेंस या फीलिंग्स दर्शाता है. अतः इसे डूइंग वर्ड या बी वर्ड भी कह सकते हैं.
वर्ब किसी भी सेंटेंस का मुख्य वर्ड होता है। यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द हो तो वह केवल वर्ब ही हो सकता है। कम, गो, रन। वर्ब दो वर्ड्स की भी हो सकती है। आई गो, मोहित राइट्स। सेंटेंस में तीन या चार वर्ब्स भी हो सकती हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। वर्ब को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब की स्टडी करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। इसमें हम क्लासिफाइड करते हैं कि बी से संबंधित हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग होते हैं। डू से संबंधित जो हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हें हम डू, डज या डिड के टाइप में पढ़ते हैं। और हैव से संबंधित जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हैज, हैव, हैड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। मॉडल्स ये मेन वर्ब का काम नहीं करते। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते, जबकि हर मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। और जैसे विल का वुड बन जाता है, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का ऑट। जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, खाली मॉडल के टाइम को चेंज करने के लिए हम इस तरह के चेंजेस लाते हैं। आई कैन टीच यू। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग ट्वाइस ए डे। Here used to is working as an adjective. He used to smoke twice a day. Here used to is working as a main verb. I need to teach her. Need is main verb. I need not teach her. Need is helping verb. Helping verb के कुछ रूल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इनके बाद जो सिचुएशंस हम एक्सप्रेस करते हैं, डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दिस इज द परमानेंट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डज हैरी रीड ए बुक? डू यू हेल्प मी? आई डिड नॉट कम yesterday। हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट जस्ट। ही हैज gone to college। We had our lunch before you reached। हैज, हैव, हैड के बाद नाउन का यूज होगा। आई हैव एन आईफोन। ही हैज ए हार्ले बाइक। मॉडल ऑक्सिलरी, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इनके बाद कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते। जैसे आई कैन टीच यू, इट्स राइट। यू शुड कम हियर, यू शुड कम होम, इट इज ऑल्सो राइट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरह नहीं होता। इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। जैसे ही कैन स्पीक फ्रेंच, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। मॉडल ऑक्सिलरी का यूज सभी पर्सन्स के साथ भी हो सकता है। आई कैन क्रॉस द रिवर, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन क्रॉस, ही कुड क्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। ought तथा used के बाद टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। We ought to respect our elders. He used to swim in the river. What is main verb? In English, how do we study main verb? टेंसेज की रचना करने में वर्ब की विभिन्न फॉर्म्स का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब्स, फिर मॉडल वर्ब्स, और इसी तरीके से जो मेन वर्ब है जिसे हम
एक ही वर्ड में एक्शन पढ़ते हैं, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म्स तक हम स्टडी करते हैं। और बिना वर्ब के हम टेंस को नहीं समझ सकते। बिना वर्ब के टेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जितनी मैक्सिमम वर्ब्स हम प्रयोग करते हैं उतने ही हम अच्छे से टेंसेस को और एक्शंस को समझना सीखते हैं। कितने प्रकार से हम यूज़ करते हैं वर्ड्स का वर्ब के रूप में